हमें इस संदर्भ में कुछ बोलना है। फॉर्चुनेटली आपके वर्कशॉप का टॉपिक कम्प्लीटली मैच करता है मेरे रिसर्च के टॉपिक से, और मेरा रिसर्च थोड़ा लंबा है। सिंस Mr. just told us we should introduce, so राकेश सिंह मेरा नाम। पहले मैंने MSc DHU से किया था, उसके बाद PhD में BARC में काम करते हुए रोबोट रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट रहते हुए PhD किया, 10 साल वहाँ काम किया। उसके बाद कुछ और करने की इच्छा हुई तो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी चला गया, पिछले 10 साल से वहाँ। शुरुआत हमने की थी DNA रिपेयर पे रिसर्च करने। मैं आपको अपनी रिसर्च पर आगे बोल नहीं करूँगा, प्रॉमिस। 2 मिनट्स DNA रिपेयर पे रिसर्च करने की शुरुआत की थी BARC। आप लोग जानते होंगे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे एटम बम बनाया जाता है। 1974 का पहला न्यूक्लियर असेंबली जो हुआ था, वो बेसमेंट में, जिस बेसमेंट में था उससे 10 सेकंड दूर हमारा घर था, वहाँ में उससे क्लोज कनेक्शन जानते हैं। फिर 98 वाले जो पोखरण ब्लास्ट हुए, उस समय मैं भाग्यशाली था कि वहीं था BARC में। तो प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल। तो आप सोच सकते हैं कि भाई वो तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वहाँ DNA रिपेयर में क्या काम है, आप कैसे वहाँ DNA रिपेयर पे क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिसर्च हैज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। रीजन हम लोग सब, हमारा सबका एंड गेम ह्यूमन लाइफ को बेटर करना है। फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, दे आर वर्किंग देयर टू क्रिएट weapon and atomic energy force using atomic radioactive atoms. परंतु ये radioactive atoms जो हैं, they have their own health implications, right? You cannot be exposed for it for long, even though a little bit of it is okay. Everybody is exposed to a little bit of radiation. I always remember my director's words when he said that don't be afraid of radiation. We joined the BARC and this was the first lecture. Don't be afraid of radiation. Do you know that if I give you a bucket full of water and I force you to take it in, you'll probably end up dead. So, but water isn't considered that dangerous. So radiation is also not that dangerous, right? So you can have the optimum amount of radiation exposure and you'll be happy. In fact, contrary to popular belief, there is a lot of research that low level of radiation is good for us. And that was my actually PhD topic, where we showed that low level radiation improves your DNA repair. But since we are here talking about research methodology and computer application, and while I was listening to Mr. Raji's lecture, I picked up some important things. He put a lot of emphasis on nakal mat karo, right? This is Google era. It's very simple to know कि कब आप नकल कर रहे हो, कब नहीं कर रहे हो। नकल करना सिंपल है, नकल को पकड़ना उससे भी सिंपल। तो इसलिए I will probably tell you a couple of tools that you can use. Google itself has a little software called Google Plagiarism Checker. Google Plagiarizer Checker. You can just Google the Google Plagiarizer Checker, you'll find the software. It has its limits, right? You can only check a certain amount of text for free. After that, it's a paid service, which you may not need, because if you are ingenious enough, you can split your text in 20 different things and can do 20 times and you will get it, right? So, the other one, Authenticate. आज के ज़माने में most of the publications, most of the journals, when you submit your text, even before going to the reviewer, there is generally an assistant editor in the journal office. His first job is to put your manuscript through the software called Authenticate. Within few minutes, it spits out word by word, phrase by phrase, कहाँ से कब कॉपी किया गया है और कितना %
आपका manuscript copy है कितना percent नहीं. So it's a good tool. It is a paid tool. It's expensive. So most places here may not have access to. A lot of the universities have. But here again, contacts count. So any one of you, if you ever want to use Authenticate, contact me. We have unlimited access to Authenticate. I can do it for you. It doesn't take much from me. If it helps you, I'll be glad to do that. Okay, now coming back to research methodology, right? So, Misra ji also talked a lot about the original research and how to be observant, find questions everywhere. So, my 20 years of research have also told me almost exactly the same thing. The most important thing in research is not the answers that you come up, is the question that you ask. It's the originality of the question that will ultimately decide or define what you get. 5 years down the line, most people think when they join PhD, I did it about 15 years ago, just like you, they would think that this is the path that their PhD will take, right? You start from year 1 and year 5 you probably graduate in that. Unfortunately here I am the news bearer of the bad news. It doesn't go this way, it goes most of the time this way. So after a year you might just get stuck. For the next 3 months nothing is working. What do? Don't ever get disappointed. That's how the research works. Most people do it like this. There is no straight line. Not only in research, even in your life, you might have thought of, okay, I'll do this and this and this and this and this. So you plan a life, and then there is a saying that if you want God to laugh, make plans. अच्छा mix बोल. तो sorry, हमें अंग्रेजों के बीच में बोलने की आदत पड़ी. वापस आ गए कभी भी रोक सकते. तो जैसे अभी बताया कि if you want God to laugh, make plans. कभी भी प्लान के हिसाब से आपको कुछ चलेगा नहीं, स्पेशली इन रिसर्च. उसका रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है. जैसे क्लर्क अभी आता है ऑफिस में, उसको पता है कि वो टिकट काटते हैं, वो टिकट काटता जाए, उसको ठीक है यहाँ से यहाँ के टिकट का इतना पैसा है. आप जिस दिन लैब में जाते हो आपको पता नहीं है करना क्या है. जब पता ही नहीं है करना क्या है, when you are venturing into a new thing, that's why you are doing PhD, because your whole reason to be in PhD is to create new knowledge. नया ज्ञान क्रिएट करना है, जिसमें आपके पास कुछ टेम्पलेट नहीं है कि एकदम सेट टेम्पलेट पे यही करना है, ऐसे ही करना है. अगर वो नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम है. कभी भी आप ये सोच के डिसअपॉइंटमेंट. तो एक छोटी घटना, हम जब PhD ज्वाइन किए, हमको एक पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक टेक्निक, तो हमको DNA रिपेयर के मेथड्स में ये बताया गया कि ये एक मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं और इससे पता चल सकता है कि कितना DNA ब्रेक हुआ है, कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है और क्या kinetics है उसकी. And if you want to compare two things, you can just look at the kinetics and compare. 6 months. Each experiment took about 7 days. So for 6 months, about 23 experiments failed, completely failed. And I was like, no, ये तो ना होगा. कोई चांस ही नहीं है होने. But then there was no option to give it up, because you have already asked the question, you want to answer. बाकी जनता है जो आपको फोर्स कर रही है कि कुछ तो करना ही है, वैसे तो हाथ नहीं ऊपर सकते. So fortunately, and it happens with lot of people, 22nd experiment worked like a magic. And ever since then, any pulse-field gel that I have ever run have never failed. वो 21 बार जो फेलियर हुआ, हर फेलियर से मैंने कुछ तो सीखा कि ऐसा क्यों हो रहा है. So one important thing in your research, always keep very meticulous record. Because अगर आपके पास record नहीं है, तो फेल हुए तो फिर अगली बार अगर exactly same thing करेंगे, तो exactly same result मिलेगा. You cannot have a different result doing the same thing. So आप जब भी कुछ कर रहे हैं, उसका record बिल्कुल complete रखिए. Failures are good, but if you have the record, you can trace back कहाँ फेल हो रहा है, and probably start changing one variable at a time.
you will end up getting to the right place. बीच में अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हिंदी पूछो, अंग्रेजी पूछो, भोजपुरी पूछो, मैं यहीं बजा हुआ था, मुझे भोजपुरी भी आती है। So the last point that Mr. Ajit was trying to make, and I was trying to elaborate on that because a lot of things that he said made a lot of sense to me. मुझे बहुत मजा आया 2 घंटे उनका लेक्चर सुन, काफ़ी दिन बाद सुना उनको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग पैटर्न पे था। काफ़ी लोगों को ब्लेम मारा उन्होंने, काफ़ी लोगों से कंप्लेंट किया। ये सब नॉर्मल रिसर्च एक्टिविटी है। तो 40 साल रहे हैं रिसर्च में, मैं 20 साल 5 साल हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने जहाँ छोड़ा वो ये था कि स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी, राइट, स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजीज आर बिकमिंग वे टू इम्पोर्टेंट इन एनी रिसर्च। हमने ये भी सुना उस लेक्चर में, ये बायोलॉजी का चीज़ है, ये केमिस्ट्री का चीज़ है, ये मैथ्स का चीज़ है, ये फिजिक्स का चीज़ है। ऑल दीज बाउंड्रीज आर completely useless in today's world. They are all man-made boundaries, right? No one said when nature created everything or howsoever, जो भी आप बिलीव करते हैं कि ऐसे क्रिएशन हुआ, that's not the today's topic, so we will not do it. But whatever is there is, it wasn't thinking, okay, ये वाला part केमिस्ट्री बना दिया, अब चलो इसको बायोलॉजी बनाते हैं, इसको फिजिक्स बनाते हैं. So when you are asking a question, you will end up using multiple tools from multiple disciplines. इसके लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है रिसर्च में जो बहुत लोग नहीं बताते हैं शुरू से, वो है ह्यूमन इंटरैक्शन, राइट? आप किसी यूनिवर्सिटी में 5, 6, 8 डिपार्टमेंट इसीलिए हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा अपना दिमाग खुला रखें, हल्का सा, आप सब कुछ नहीं जान सकते, बट एक आइडिया रहे कौन लोग क्या कर रहे हैं आपके पास पड़ोस में, ताकि अगर आपको कुछ समस्या आई, आप बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं और उसका मुझे केमिकल एंगल आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रोफेसर इस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, ठीक है? तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसर्च में, ह्यूमन इंटरेक्शन, ऑलवेज कीप कॉन्टैक्ट विद पीपल who have different specialties, different importance. PhD, unfortunately, when you start PhD, let's say this is the circle of knowledge, right? ये है। आपका उम्मीद होता है कि जब आप PhD करेंगे तो सर्कल ऑफ नॉलेज बड़ा हो जाएगा, आप बड़ा कर रहे हैं, बट होता ये है कि आप यहाँ हैं, आपका काम बस इतना ही है, पर हजारों PhD इतना ही करके ये भाई हमेशा बड़ा हो रहा है। तो हालांकि आपका फोकस यहाँ है, आप हमेशा यहाँ पे फोकस रखो, बट बी अवेयर टाइम में क्या चल रहा है, that opens up your brain to look at the same problem from different angles. हर किसी का दिमाग एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। अभी जल्दी ही तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, आप लोग अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो जानते हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन बहुत सारे पोल्स आए, सबने बोला डीएमके जीत रहा है, डीएमके जीत रहा है, डीएमके जीत रहा है, फिर एक बोल रहा है डीएमके जीत रहा है, राइट? ऑल बेस्ड ऑन व्हाट? 1000, 2000, 5000, एट द बेस्ट 10,000 पीपल। सो 10,000 लोग मिलके 10 करोड़ लोग का projection is kind of difficult job unless you're doing the science right, and unfortunately I would say that most of those surveys are done in air-conditioned rooms. They don't even go there. Okay, so what happens is there is complete failure of scientific methodology here. Why? The proper way to do it, the first thing that you would ask is randomization, right? Was the sample random? If it wasn't, then it's not a representative sample. All that you will get is garbage. It's not going to be representative to the population. Whenever you are trying to project. एक छोटा और टेस्ट मैं आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ, 1 नंबर से 10 नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर अपने नोट पे लिख लीजिए, कोई भी एक सब टेस्ट लिख लीजिए। एक छोटा एक्सपेरिमेंट यहाँ आपके सामने, जितने लोगों ने भी 0 लिखा, हालांकि मैंने 1 से 10 तक कहा था,
जीरो लिखा तो हाथ में, अगर नहीं है तो जीरो है 100। कितने लोगों ने एक लिखा? किसी के पास था? किसी ने नहीं लिखा? ओके। कितने लोगों ने दो लिखा? कृपया हाथ उठाएं। एक, तीन, 1 2 3 4 5 6 4 3 4 5 6 5 3 3 6 9 12 6 7 9 8 1 2 3 9 1 2 10 3 था 10 20। मैंने आप लोगों को कोई कंडीशन नहीं दी थी कौन सा नंबर लेना है, कंप्लीटली रैंडम था। Now look at the data and see what you see. Do you see any pattern that you want to bring out? Anyone? Anyone? Do you want to tell me any specific pattern that you notice in this data? I have written कितना लोग क्या क्या बोले. Can anybody tell me any pattern, anything interesting in this data? Okay. Most people are just like 5 and 6. Okay. So interestingly, what happened? Most of you chose the numbers between this, right? Extremes are generally avoided. This is human tendency. This is very human tendency. I have done this experiment in 20 different classes. Always happens this. So research में जब कहा जाता है कि आप randomization करके research करो, अगर आप humanly randomize करने की try करते हैं तो error होगा always. You will always end up making error, looking for the larger number or the medium number, or most of the this is the general bell-shaped curve, right? So most people will choose in the center. That's why any time when you want to randomize, let's say you want to do 20 samples, do 20 different experiments, this order में करना है, that makes a lot of difference in the field that at least I work in protein. Always use computers. Since your thing is computer applications, always use computers because they don't have bias. You tell them to generate random numbers, they will generate random numbers without any bias towards lower or higher. I don't know, आप लोग सब लोग अगर कभी try नहीं किए हैं तो this can be done in simple programs like Excel. Almost everybody knows Excel these days. More advanced randomizations can be done with simple statistical programs like R or SAS. All those things, if you have not heard, that's fine, you can hear it later on. But so randomization is one important thing where you can always use computers, never trust your instincts, because this will always be wrong. If you trust your instincts in randomization, you will yourself see क्या हुआ है. So you use that. The next thing that I wanted to show is so randomization के बाद sampling. आप लोग में ज़्यादा लोग बायोलॉजी से हैं या अदर ब्रांचेस? How many people are biology? Okay, so what majority of you are in biology? Majority of you will always end up with this problem. How many replicates do I need to do? No one has ever been able to answer this question. How many replicates? Unless आप ये भी बताओ कि उसका गेम का एंड रिजल्ट क्या है, क्या चाहते हो आप? 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप रिजल्ट चाहते हो, 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर रिजल्ट चाहते हो, या 99.99% कॉन्फिडेंस लेवल पर रिजल्ट चाहते हो? That will determine कितना replicates जरूरी है, right? There are programs, there are tools on the web that you can use these days for free without ever understanding the role of randomization. That's fine, as long as you end up getting randomization and number of replicates. So मान लीजिए कुछ लोग आप में से रिसर्च कर रहे हैं बायोलॉजी के, but they are using equipment. Let's say somebody is using a spectrometer, right? So same spectrometer we have theoretically in the morning, in the afternoon. वो मून का फेज कौन सा है वो भी डिटरमिन कर सकता है, just a joke.
but it can't. Okay, so इसके कहने का मतलब ये था कि equipment has its own variability, its own error rate, and it can change from time to time. And then your biological sample has its own variability. So you will end up getting these two terms repeatedly when you start sending your papers to the journal. They'll ask for it. Technical replicates कहाँ हैं? Biological replicates कहाँ हैं? इन दोनों में क्या सामंजस्य है? क्या आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इंटरप्रेट किए जा सकते हैं रेप्लिकेट्स के दोनों हिसाब से, या नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स इनफ है या नहीं है? दैट विल डिसाइड कितना स्टैटिस्टिकल पावर है आपके रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन में, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. मैं कुछ बायोमार्कर रिसर्च में काम करता हूँ और आई विल गिव यू अ लिटिल एग्जांपल. अगर नहीं पसंद है तो मैं बीच में रोक दूंगा, 2 मिनट करता है. So let's say we are working on finding a diagnostic marker for breast cancer diagnosis. Okay, so there are multiple protein molecules that get either elevated or down-regulated during the initial phases of the breast cancer development. Now, आप में से सबको पता होगा कि कैंसर में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ उसका अर्ली डायग्नोसिस है. अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटेबल है, नहीं हुआ once it's stage 3 or 4, the surgeon and the oncologist just raises the hand and says, God will give you 3 months, 6 months, 9 months or a year, and that's it that we can do. All we can do is torture you some more by giving some chemotherapy and radiotherapy, and that will prolong your life by 3 months, 6 months if that is important. A lot of people will not choose it as well. So what I was trying to show is that, let's say I did 10 different experiments, and these are the 2 molecules that I'm looking at. These are the labels of molecules, right? And 10 different experiments. If the first molecule looked like this in 10 different samples, does this look like any good candidate? There is too much variability. आप उससे बेस पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान को कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है. But if you find a molecule that all the 10 data show up in this label, just for the sake of assuming, मान लीजिए कि 5 माइक्रोग्राम पर लीटर, हमेशा जब भी आप ब्रेस्ट कैंसर सैंपल लेते हो तो it shows up there, but in normal samples it's not, it's more or less, both ways. So this molecule will end up being recognized as a really good marker, not this one. But if you only did one experiment and that was here and that was here, you have no way to know which one is right. You did 2, becomes a little bit better, but still nowhere close to clinical levels where you can start risking patients' life. It's very important. When you are working with chemicals, with model organisms, you can do those things. But when it comes to trying to find diagnostic markers or prognostic markers or targets for the drugs, it becomes a high risk game, right? So you have to have really large sample, and those samples must be randomized. Let's say for randomization, there are 2 types of human beings, right? Male, female mostly. Mostly, I'm saying because of the political correctness. So there are a lot of variation, biological variation between the 2 groups, males and females. If your samples were not randomized, you tested the male samples first and then female samples later on, and you end up getting some difference. Let's say something goes down in females and not in males, and you come up with this is whoa, this is good, this is only specific to females. Turns out your machine was getting bad each day, and 5 days that you ran male had nice signals. Next 5 days there was no signal, not because the females didn't have that molecule, but because the machine detected it. So that's why the randomization becomes really important and really critical in case of clinical situations. The next thing that I will Okay, so randomization becomes important. Once you have randomized, you have the data. Now you want to analyze and make sense of this data, right? What do you do? So I think most of you would know that there are 2 hypotheses, H0 and H1, right? And
Have you heard of this null hypothesis? That there is no difference, right? And then when the hypothesis fails, there is difference. So you want to have a significant difference or not significant difference. So that part, and then a lot of people in these days in papers will have this p-value reported, right? Have you heard of p-value? One of them? No? Okay, let's. If we take a lecture to explain p-value, just to give you an idea, p-value is an indicator of how rigorous your experiment is and how confident you will end up being in predicting your outcome of the result. So most people will say, like, for p-value of 0.001 in the results or value, so these differences are statistically significant if p-value is less than this or less than that. Since most of you have not heard, I will go there, but a lot of people in a lot of publications end up reporting completely rubbish p-value, right? Because they do not understand, they use the software spits out that p-value, and that's the report, without ever understanding what that p-value is. You would know. Believe me, by the end of your PhD, in your thesis, that सर पी वालों को हिंदी में लिखा है बोलिए। अरे बाप ये तो बहुत मुश्किल बात है। पी वैल्यू जो है अब उसका मैं ऐसे मतलब पावर वैल्यू तो नहीं कर सकता, उसको पी वैल्यू ही रहने देंगे because it was defined that way. But I'll tell you what p value is and try to do in Hindi. So इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से देखिए। यहाँ पे 10 सैंपल थे, यहाँ पे भी 10 सैंपल थे, ठीक है। अब ये 10 सैंपल के रीडिंग्स जो हैं, इसमें वेरिएशन बहुत है, विभिन्नता बहुत है, ठीक है। ज़्यादा विभिन्नता जिस सैंपल में है उसका पी वैल्यू हायर होगा, और आपके रिसर्च में सिग्निफिकेंस के लिए लोअर पी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जितना लोअर पी वैल्यू है, जैसे 0.05 पी वैल्यू अगर कोई बोल रहा है, तो मतलब आप 95% कॉन्फिडेंट हो आपका रिसर्च जो आप बोल रहे हो सही है। जो 0.01 हो गया तो 99% आप कॉन्फिडेंट हो कि जो बोल रहे हैं सही। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स में मतलब मुश्किल है मेरे लिए कहना, पर होपफुली आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी पी वैल्यू कभी हिंदी में पढ़ा नहीं हिंदी में बताना मुश्किल है, पर उसका सार है जो उसका प्रोबेबिलिटी है। हिंदी में जो एक्चुअल वर्ड वो प्राइवेट है। It's the confidence level of जो data that we have collected. या The confidence level. हाँ, तो हिंदी में उसका शब्द अभी पी वैल्यू का है प्रायिकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हिंदी प्रायिकता है। तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी तो फिर भी आप लोगों ने सुनी, प्रायिकता नहीं सुनी। So let's not spend too much time on that. So I was also going to talk about this thing that I started with, that there is too much overlap, right, between the subjects. In fact, I always personally prefer to call natural science. I don't call physics, chemistry, biology, mathematics. My personal preference is natural science because it covers everything and it tells you everything that you need to ask the question and try to answer it. आजकल आप लोगों ने शायद सुना हो, हल्ला बहुत है इसका। At least if you are looking at the scientific journals, big data. कितने लोगों ने सुना है इसका नाम, बिग डेटा? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, हम सुना दे रहे हैं। अब आज के बाद तो कहेंगे सुना है। तो बिग डेटा का मतलब यह है कि जैसे कंप्यूटेशनल पावर हम लोग का बहुत फेनोमेनली बढ़ा है पिछले 10 साल में। मूर्स लॉ है, कहीं से आ गया बीच में। मूर्स लॉ है कि हर सेकेंड ईयर में कंप्यूटेशनल पावर डबल हो जाता है। सो इट्स राइजिंग जियोमेट्रिकली। एक छोटा उदाहरण, चांद पे जब आदमी गया था उसका टोटल कंप्यूटेशनल पावर जितना यूज हुआ था उसका 10 गुना कंप्यूटेशनल पावर मेरी जेब में इस समय। सो कंप्यूटेशनल पावर हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। व्हाट डज दैट डू? आपका हमारा लिमिटेशन क्या है? हम बहुत सारी चीजों को रिपीटेडली नहीं कर सकते, बोर हो जाते हैं। कंप्यूटर्स आर गुड एट, दे एक्चुअली लव डूइंग इट रिपीटेडली। सो यस, ओके।
सो एडवांटेज इसका ये है कि जैसे पहले लोग पीएचडी करते थे, एक प्रोटीन लिया, उसका सीक्वेंसिंग करते करते 5 साल निकल गया, सीक्वेंस आया, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखा, पीएचडी हो गई। आजकल सीक्वेंसिंग हम एक दिन में 2000 प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करते हैं। On mass spectrometers that are as fast, they will spit out 2000 protein sequences in a day. तो उससे क्या हो रहा है कि amount of data that is being generated is huge. It's beyond human comprehension. Fortunately, the computations capability, computational ability is increasing at the same pace, so you can use it. But again, there are no computers that are going to ask questions for you. That's the essence of your research. There is huge amount of data currently. A lot of people, including me in past 3 years, have not gone on bench to do any research. क्योंकि हजारों labs जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। आप PubMed में एक सर्च वर्ड डालो ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, उस पर करीब 20,000 पेपर आपको मिलेंगे पिछले 5 साल में। 20,000 लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे ब्रेस्ट कैंसर पर रिसर्च किया है। हमको फिर से उन सबको करने की जरूरत नहीं है। और वो 20,000 लोगों ने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे। हमें क्या इंटरेस्टिंग लगता है, हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या जिसमें सबका डाटा यूज करके हम रिजल्ट, उसका क्या फायदा क्या है? आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो कितनी बार करना है? 2 बार, 3 बार, वो भी एक ही आदमी कर रहा है, ठीक है। हो सकता है उसका दिन अच्छा हो, या हो सकता है वो पानी के बदले तेल मिला रहा हो, कौन जानता है, ठीक है। उसने एक रिजल्ट दे दिया। पर अगर 10,000 लैब्स ने कुछ रिपोर्ट किया और सब में मैं एक कॉमन ट्रेंड खोज सकता हूँ, तो आप सोचिए कि उस रिजल्ट की वैलिडिटी कितना है। इट्स नंबर ऑफ, नाउ टॉक अबाउट नंबर ऑफ बायोलॉजिकल रेप्लिकेट्स एंड टेक्निकल रेप्लिकेट्स दैट हैव बीन डन। सो दिस वे योर बिग डेटा क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, यू नेवर डिड एनी एक्सपेरिमेंट, यू जस्ट, there are public data repositories now on the web, you can access it, you can download everything. And all you need is access to a keyboard. You don't even need your processing power. You can use so-called cloud computing, right? At least I hope you have heard this one. Now, cloud computing? No? Some people know it. Don't know it from the news websites or news portals, because मैं सुन रहा था एक सज्जन आया, cloud computing क्या है? तो बोल रहे हैं कि पता है आपको क्या किया है अमेरिका वालों ने कि सब कुछ तो कर दिया क्लाउड पे, अब बताओ पानी बरस गया तो क्या हो? प्लीज, क्लाउड कंप्यूटिंग का पानी बरसने से कोई संबंध नहीं है। जस्ट अ नेम गिवन फॉर द कंप्यूटेशनल पावर। सो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन यूज देयर प्रोसेसिंग पावर for doing the same thing. This is also called crowdsourcing, crowd computing, where you have a problem and a lot of research in this world, at least so far, is funded by public money, public taxpayers' money, and that's why it's available for you, for me, for any public, because it's your money that was used to do the research. So उसमें advantage ये है कि आपके पास data है और बहुत सारे laboratories में computers हैं, servers हैं, super computers हैं, they are all acquired by public money and they are accessible with some amount of effort from your side. किसी को मेल लिखना होगा कहीं, किसी से पासवर्ड लेना होगा कहीं से, but you can have access to those things if you want. If you really desire, you will find a way. Okay, and then all you need is even like quickest computer, because computing आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रही है. You submit the data, you submit your question, and then 3 days later, 4 days later, depending on what you were looking for and how large the data set is, some output will come out. Then you look at it and see if that makes any sense. See if that is answering your question during the labor. Or, more importantly, is that throwing up some more interesting questions? Because बेचारे PhD वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन क्या है, किस चीज को आंसर करना है. So if you look at this, each question that you try to answer will throw up 10 different questions. So the big data is here for people who don't want to dirty their hands on the bench, but still want to do really good research. Some people prefer to call it theoretical biology, others will call it just data science. Names don't matter. पहले ही बताया मैं प्रेफर करता हूँ सब नेचुरल साइंस है, मैं मैथ. हमने जब यहाँ बायोलॉजी
चूज़ किया था 10वीं के बाद, तो हमें तो गणित नहीं पढ़ा, जैसे कंप्लेन कर रहे थे कि आप केमिस्ट्री वालों को बायोलॉजी नहीं पढ़ा। हमारा हमेशा से कंप्लेन यही रहा कि जो लोग गणित नहीं पढ़ाते एवं तो कैलकुलस यूज करना पड़ता, हमने मेरा क्या होगा? Fortunately, even for those things, this is just for the information for all of you, that if you are really interested in learning anything, calculus, वेब पे अब IIT के सारे लेक्चर अपलोड होते हैं। नेक्स्ट ईयर से IIT के सारे लेक्चर्स लाइव आप सुन सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में। लेक्चर वहाँ पढ़ा रहा है, आपको IIT में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर आपका ज्ञान, आपका एम है सीखना, आप घर में बैठे सीख, तो ऐसा ही कुछ हमको भी करना पड़ा। मैं ट्रेनिंग से बायोकेमिस्ट हूँ, मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, बायोकेमिस्ट्री से PhD की। अभी मैं काम करता हूँ कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग से, उसका उससे कोई मतलब नहीं, एब्सोल्युटली कोई मतलब नहीं। तो और मुझे फिर से मैंने कोई कोर्स तो किया नहीं, लेकिन फिर से MS करने गया नहीं, PhD करने गया नहीं। बट मेरा क्या था, मेरा क्वेश्चन जो था दैट रिक्वायर्ड कि मुझे ये चीज़ जानना है, तो मैंने सीखा वेब से सीखा। स्टैनफोर्ड के कोर्सेज अवेलेबल हैं, MIT के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके IIT के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप एक बार कोशिश करके देखो, सब कुछ डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए और पैशन होना चाहिए कि क्या सीखना है। ओके, सो जस्ट टू गिव यू कि मैं कैसे डाइवर्ट हुआ वहाँ। हिस्टोन्स आर लिटिल प्रोटीन्स, लॉट ऑफ पीपल सिंस दे आर बायोलॉजिस्ट मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिस्टोन्स, राइट। हम हिस्टोन्स पे काम कर रहे थे। हमारा प्रोजेक्ट ये था कि भाई हिस्टोन्स डिग्रेड कैसे होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बनती है वो नष्ट होती है, ठीक है, और ज़रूरी है। बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बिना डिस्ट्रक्शन के क्रिएशन नहीं होता। तो ये सवाल काफ़ी हिस्टोन्स वर द फर्स्ट प्रोटीन्स टू बी डिस्कवर्ड 125 years ago। अब तक किसी ने सोचा नहीं, या जो भी उठा लीजिए, किसी ने बताया नहीं ये कैसे डिग्रेड होता है। तो हमने सोचा कि भाई देखते हैं कैसे डिग्रेड हो। तो शुरुआत एक बड़ी लिस्ट से किया, एक मॉडल सिस्टम से। उसका हिस्टोन एडवांटेज है, हिस्टोन्स के जनरली 100 सब जीन्स होते हैं हमने अपने यार मेमल्स में, तो इट्स हार्ड टू स्टडी। बड़ी लिस्ट में 2 जीन्स होते हैं, तो उधर जेनेटिक मैनिपुलेशन भी ईजी है, उसको डिलीट कर सकते हैं, दूसरा ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी करने का मन है जिसके साथ अच्छे से कर सकते हैं। तो वो एक डिग्रेडेशन परफेक्ट हो जाए। अब प्रॉब्लम है उसमें 2 हैं, तो वो तो हो गया बायोकेमिस्ट्री से एक्सपेरिमेंट कर करके, उसको जल रन करके, वेस्टर्न वॉशिंग करके हो गया। जब हमने उसको ह्यूमन्स में करने की कोशिश किया तो उसमें 100 से पेयर्स ऑफ हिस्टोन। हमारे तो बच्चे भी पैदा होकर बड़े हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अगर हम उस मेथड से करने की सोचें तो हमको उस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से करना था जो हाई थ्रूपुट, जिसमें ज़्यादा सवाल एक साथ पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम मूव करके प्रोटियोमिक्स में गए। अब प्रोटियोमिक्स में गए तो उसमें डेटा एनालिसिस सब कंप्यूटर से होता है। इंसान तो हाथ से देखते ही रहे, 100 GB डेटा एक बार में जनरेट हो रहा है, क्या करेंगे यार, 100 GB डेटा देखते देखते फिर हम जुड़े रहेंगे। तो उसके लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सीखना पड़ा कि ठीक है इसका कैसे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग यहाँ मेथडोलॉजी सीखने आए हैं, और मेथडोलॉजी जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्वेश्चन एंड उसके बाद पुलिस वाली बात है कि मर्डर हो गया, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, वहाँ जाइए जहाँ सबूत ले जा रहा है। ये मत करिए, अभी शर्मा जी हमको कहानी सुना रहे थे रास्ते में कि मर्डर हुआ, एक किसी भैंसे ने मर्डर किया किसी को, तो भैंसा जा रहा था, चूहा भाग रहा, बोला अरे भारत में मैंने मतलब अपराध मैंने किया तो क्यों भाग रहा, बोला वो छोड़ो, अगर पकड़ लिया तो मैं तो ये नहीं सिद्ध कर पाऊंगा ना कि मैं भैंसा नहीं हूँ, वो तो हमने कहीं हमें अंदर करना है। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब कि सवाल जो है जहाँ पे आपको लीड कर रहा है, जो चीज़ आपका अगला क्वेश्चन क्या है उधर जाइए आप। खाली मतलब जैसे कि ये रिसर्च में कभी भी ऐसा डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं होगा। टेक इट फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव बीन देयर 20 years now and I have seen many PhDs including mine with 20 plus knowledge। तो उसमें आप उसको फॉलो करिए रीड को। एक और मज़े की बात जो ज़्यादातर गाइड लोग नहीं बताते हैं कि डाइवर्जन है,
कभी भी आप प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं तो आपको लगता है ठीक है हमको ये चीज़ स्टडी करना है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी बीच में एक डेड एंड आ गया, 2-3 महीना 4 महीना तो हो ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे? तो उसके लिए आप हमेशा अपना प्रोजेक्ट जब कर रहे हैं तो एक छोटा साइड में कुछ रखें कि इसको भी कर सकते हैं क्या, प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च इन PhD, बिकॉज कई बार हमने देखा है ऐसे शुरू होता है कि जो रिसर्च शुरू किया एक्चुअली वो PhD का बेसिस में नहीं होना, प्लान बी बेसिस पर बन गया है। एक मेरा पेट व्यू कंप्लेंट है इस सिस्टम के खिलाफ, यहाँ पे सिनॉप्सिस को लिखवा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। भैया अगर हमको पता ही होता कि किसी रास्ते जाएगा तो उनको रिसर्च करने की जरूरत क्या होती है, हाँ? फिर क्या जरूरत थी? फिर तो हम लिख देते हैं यहाँ से गूगल बोलो पढ़ो और सही ये बात है, ये अच्छा लग रहा है, इसमें जो आया वो सही है, किसी रास्ते जा रहे हैं, होता नहीं है। इसलिए मेरा हमेशा ये सिस्टम के खिलाफ कंप्लेंट है कि बच्चे को रिसर्च करने दो, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद सिनॉप्सिस और थीसिस देने का टाइम दो, सारा सिनॉप्सिस जमा करवा लिया, और उसके बाद 2 साल बाद वो तो सिनॉप्सिस वाला पाथवे तो काम ही नहीं किया, वो प्रोफेसर बताया ठीक है मेरे को नहीं आता आप तुम ये करो, तो 2 साल बाद फिर से रजिस्ट्रेशन चेंज किया, फिर दूसरा सिनॉप्सिस लिखा, और फिर वो यूनिवर्सिटी वाला एडमिनिस्ट्रेटर है उसको तो 22 महीना चाहिए मिनिमम, उसको तो इससे कोई मतलब नहीं था, उसके पहले 2 साल कई गड्ढे में पौधे भरे उससे कुछ निकला। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये सिस्टम थोड़ा बदलना चाहिए। मैं जनरली सिस्टम के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता, तो कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसमें से एक मेन कंप्लेंट है PhD के खिलाफ। आप लोगों को क्या लगता है, सही है गलत? सही है तो सही है तो आप लोग अपने टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर जोर डालिए, ये सिस्टम कहीं से बदलना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को तो कहना पड़ेगा, अगर जो जैसे चल रहा है उससे चलता रहा तो बदलना मुश्किल है। फिर मेरे जैसा आप भाग जाओगे, मैं छोड़ के भागे, मैं सोचता हूँ मैं पलायनवादी हूँ, छोड़ के भागे आ रही हाँ इससे नहीं होगा, मैं तो भाग जाऊँगा, पर वो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, पर मुझे लगा कि और हर किसी की इंडिविजुअल चाहे, जैसे मिश्रा जी बोले तो अपना सर उठा के ले आते थे क्लास में, हमको हमसे नहीं मत इससे ऊपर हो गया, अब तो सब लोग का अलग अलग अप्रोच होगा उसके लाइफ में। But मेरे कहने का मतलब है कि there are certain things that need to be changed. In my opinion, this is one of them. ज़्यादा थक गए हो आप लोग? तो और नींद आ रही हो? I have a question. हाँ जी। Question is just how mutagenic and genotoxic material affecting the DNA. Genotoxic and mutagenic material. How reacting with the DNA? How does it react to the DNA? Okay. So most of the genotoxic reagents, and this is not universal. Okay. In science there is nothing universal. Science relies on turning over itself. So most of the time, I think I wrote it somewhere here to say, but science relies on its own overturn. There are no paradigms, that becomes creationist. वो बाबा जी लोग का बात है कि ऐसा कहाँ बता दिया। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सूरज पूरब में निकलता है, 5वीं तक जाते जाते पता चला सूरज तो निकलता ही नहीं, ये क्या है, तो धरती घूम रही थी, सूरज तो जहाँ है वही है, ठीक है। तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अब आपका सवाल कि जीनोटॉक्सिक एजेंट्स DNA से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द DNA, as you know, is a chain of phosphate bases and nitrogenous bases and phosphate and sugars. So mostly it's pentose sugar. Deoxyribose in case of DNA and ribose in case of RNA, right? Most of the genotoxic agents work by inducing what are known as free radicals. Have you heard of free radicals? Okay. So free radicals are extremely active things, let's say, that are generated because of the unpaired electrons. So they become pretty aggressively active. What happens? That leads to the breakage of the bonds between this sugar and the nitrogenous base. That creates mostly abasic sites. So that's the base gayab ho gaya. If I made a, if this is your DNA
and most of you know it's a double helical thing, right? So ये bond अगर टूटा, ये गायब हो गया, तो ये बेचारा तो बिना पेयर के हो गया। बिना पेयर के हो गया तो मिश्रा जी बता रहे हैं दुनिया में सब जगह कॉम्प्लीमेंटरिटी है, राइट? बिना कॉम्प्लीमेंटरिटी के फिर ट्रबल शुरू हुआ। तो अब सेल्स को इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के चक्कर में वो क्या करता है, यहाँ कट मार देता है, ठीक है? अब कट मार दिया तो एक एंड खाली होगी। प्रॉब्लम ये है कि सेलुलर सिस्टम में कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका काम है जहाँ ही कट मिला वो उसको शुरू करना शुरू कर दिया, तो उधर गैप हो गया, उसका थोड़ा डीएनए डिलीट हो गया तो हो गया। डिलीट तो छोड़िए, डिलीट की बात तो बाद में, अगर एक ही बेस रिप्लेस हो गया, डिम्यूटेशन हो गया। So most of these genotoxic agents act via free radicals. Some can be direct, like ionizing radiation, right? Ionizing radiation is what? It's a packet of energy. It can simply break the bond, and if the bonds that were broken are close enough, let's say the two breaks that were made that are less than 5 base pairs apart, you end up creating a DNA break. If they were not, then what you create is called nick. So nick can be repaired much easily, much quicker. The deletions are hard to, because what happens is once it is deleted, the problem that arises is that now you have to synthesize it, so you have to get the whole synthetic machinery. एक ही स्ट्रैंड कट हुआ तो फिर भी ठीक है, दोनों एक साथ कट हो गए, then you lost the information. जब इंफॉर्मेशन लॉस हुआ तो सेल के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो इट डजंट केयर, ठीक है, उसको किसी तरीके से जोड़ दो, गांठ मार लो, रखी ले, अगर चल गई तो चल गई, नहीं चली तो फिर म्यूटेशन हुआ और सेल डेथ हो गई। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो फिर भी ठीक है, सर बेचारा एक और बात मान लो, ईस्ट है वो तो एक ही सेल है, हो गया, तो वो लास्ट रिसर्ट भी यूज करता है, वो क्या करेगा, ट्राई टू फाइंड अ होमोलॉगस रीजन समवेयर इन द जीन, उसका सीक्वेंस कॉपी कर लेगा वो। So there is a chance that it will survive, but there is a chance it will not. Did I answer your question or not? Same pattern carcinogenic, but it's same working as mutagenic and. So the difference between mutagenic and carcinogenic is an important one. All mutagens are not carcinogens, okay? But all carcinogens are mutagens. तो सोचने की कोशिश करिए, म्यूटेशन जो है डीएनए में वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे होते हैं, इनफैक्ट आप एक दिन यहाँ धूप में घूमिए, आज मैं धूप कह रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कितनी धूप थी। You create about more than 1 million breaks in your DNA. Okay, more than 1 million breaks in each cell. Consider that you got 10 to the power 13 cells. How many breaks you created? But fortunately, the cellular repair machinery is good enough to recognize it, repair it, and you are okay. Another important factor, we as so-called brown people, or black people, have a lot of melanin that acts as sun protectant. So you don't need as much sunscreen as my Dora brothers there need. So वो बेचारे बीच में जाते हैं तो पूरा और हर एक घंटे बाद फिर से लगाए, लेकिन नहीं लगाया तो उनको स्किन कैंसर, स्किन मेलानोमा सब कुछ होने का बहुत चांस होता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को डिफाइन करती हैं, म्यूटाजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जैसे आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है जिनको डिफाइन करना है, केमिकल वजह से म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक का कोड, they perform certain tests. One of the basic ones that all of you in biology will read at one point or the other is called Ames test. Bruce Ames discovered it, where basically you are looking for some mutation in an organism that cannot grow in lack of a particular compound. मान लीजिए अमीनो एसिड है, हम सब को अमीनो एसिड की जरूरत होती है, हम सबको पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम रिक्वायर्स पड़ी अमीनो एसिड, बट उसमें से 10 ऐसी हैं जो आपकी बॉडी बना सकती है, 10 ऐसी हैं जो आपको बाहर से लेना ही लेना है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग यीस्ट एंड बैक्टीरिया, दे रिक्वायर एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल अमीनो एसिड, बट देयर आर सर्टेन म्यूटेशंस जिससे वो अमीनो एसिड का नीड खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है, ये ऑर्गेनिज्म वो नहीं रहा जो था, इसका वो लिमिटेशन खत्म हो गया, इट बिकम्स अ सुपर ऑर्गेनिज्म। इन कैंसर व्हाट इज द प्रॉब्लम?
the cells generally divide and die, but cancer cells, they divide and divide and divide and divide and never die. So they get this superpower, super ability to just keep going in the cycle, right? So this is how the immune system was divided. Okay, अगर ये ऐसा हो रहा है तो मुझे ये carcinogenic हो, and because this is how the carcinogenesis works when the cell cycle regulation fails. Any questions? So before going into the cancer, what were we talking about? Scientific methods. Okay, you have been listening about scientific methods for quite a long time. It might be a repetition, but it bears